Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about some MCQ questions on single phase transformer. This will be helpful for GATE examination as well as some competitive examinations. So I am going to talk about question number 1. Alternating voltage can be raised or lowered with the help of transformer, right? You can increase or decrease the voltage by using the transformer. In a transformer, electrical power is transformed from one circuit to another without the change in frequency. That is the definition of transformer. How to define the transformer is an electrical device which will transform electrical power from one circuit to another without the change in frequency and power. So without the change in frequency, right? Question number 3. A transformer is a AC device, right? It is a AC device. Question number 4. A transformer works on principle of Faraday's law of mutual induction. It works on the Faraday's law. Self-inductance, induction, none of the above. Actually, it is a Faraday law of mutual induction, self-induction, none of the above. Faraday law. Question number 4A. Okay. So question number 4A. Question number 5. The primary and secondary of a transformer are coupled electrically, no, magnetically. प्राइमरी इट इज इलेक्ट्रिकली मतलब कोई प्राइमरी और सेकेंडरी में डायरेक्ट कनेक्शन होनी चाहिए नहीं था. दो बोथ आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. हाँ, अगर यहाँ होता कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, सो इट इज कपल्ड इलेक्ट्रिकली. बट हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर कपल्ड मैग्नेटिकली. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 का बी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इज greater than that of the primary voltage, less than, no, same as, yes, frequency of primary side or secondary side will be same. Okay, so answer is C. Question number 7. The DC supply is not used for the transformer as, why it is not used? As eddy currents are more, no. Hysteresis loss is more, no. DC winding resistance is very high, no. Burning of winding due to high current, right? This is the answer. I have discussed part 1, why the winding will be burnt out, right? So burning of the winding due to high current. The flux in the transformer core is rotating. Flux is not rotating. Partly rotating, no. Partly alternating. Purely alternating, yes, it is purely alternating. Flux in the transformer is purely alternating. Question number 9. A transformer transfers electrical energy from primary to secondary, usually with a change in. Transformer transfers electrical energy from primary to secondary, usually with a change in frequency, no. Power, no. Time period, no. It is a voltage. You can step up or step down the voltage, but power, frequency and time period will always be constant. So it is a voltage. Time period of frequency एक ही term actually. Okay. So it is C. Right. Question number 10. A core of transformer is laminated to reduce eddy current loss. Right? That is answer A. The vertical portion on which the coils are wound in a transformer is called as limbs. Generally is used for laminations of a transformer core. High grade silicon steel is used for laminations of transformer core. Laminations का purpose क्या है? To reduce the eddy current loss. High grade silicon steel का purpose क्या है? To reduce the hysteresis loss. Right? The core provides core का काम है रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है. इट इज ए मैग्नेटिक सर्किट. कोर प्रोवाइड्स लो reluctance. B. Path to the flow of flux, right? So the core provides the low reluctance path to the flux. Okay. Okay.
Question number 14. In a core type transformer, core encircles the winding. That is the answer. Core encircle the winding. Winding encircle the core. That is a shell type. Okay. So A answer is correct. 15. Has double magnetic circuit. कौन सा सर्किट में डबल मैग्नेटिक सर्किट रहता है? सेल टाइप. ओके, सेल टाइप. शेल टाइप कंस्ट्रक्शन हैज ए डबल मैग्नेटिक सर्किट. दो पाथ रहते हैं, एक ऐसा रहता है और एक ऐसा. क्लियर? और दिस इज द, सॉरी, it is like this. It is not correct one. I'm just using like this. It is like this. It is like this. Coils are placed here. Secondary, primary. It is not like this. Sandwich type of winding. Flux will be produced here and it is flowing in this way. So this is the shell type. So shell type construction has a double magnetic circuit, right? Okay. In a shell type construction, the core encircle the winding, right? Winding nahi. This is first A is correct. In shell type construction, core encircles the winding. देखो core बाहर है, winding अंदर. Core encircles the winding, right? A is correct. Question number 17. Okay. Coils are generally used in the shell type construction. Single layer, sandwich, cylindrical, none of the above. Sandwich type of coils are placed. Sandwich type, चाहे यहाँ हो चाहे कोर में हो, दोनों जगह sandwich type of winding है. To reduce the leakage flux. Or once the leakage flux will reduce, voltage drop in the winding will reduce and you will get more voltage at the secondary terminal. So sandwich type of winding. Okay. Are generally used in core type. Again, sandwich type of coils are generally used in the core type construction. दोनों जगह sandwich है, right? Natural cooling is effective in natural cooling. अभी क्वेश्चन ये नेचुरल कूलिंग कहाँ चाहिए? लो रेटिंग के लिए. लो रेटिंग के लिए. और लो रेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं शेल टाइप. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. लो रेटिंग शेल टाइप होते हैं और हाई रेटिंग कोर टाइप होते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप कंस्ट्रक्शनली. सो कोर टाइप, शेल टाइप काय के लिए है? दिस इज फॉर लो रेटिंग के लिए. बी केयरफुल अबाउट इट. ओके. और दिस इज फॉर हाई रेटिंग. सो लो रेटिंग मतलब शेल टाइप. नेचुरल कूलिंग कहाँ चाहिए? नेचुरल कूलिंग लो रेटिंग के लिए चाहिए. लो रेटिंग मतलब शेल टाइप, राइट? और अगर ऑयल कूलिंग चाहिए तो हाई रेटिंग है. हाई रेटिंग मतलब कोर टाइप. ओके, बी केयरफुल अबाउट इट. ट्वेंटी. कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर. कौन सा ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज रेट ट्रांसफार्मर? हाई वोल्टेज. सो अगेन इट इज व्हाट? कोर टाइप. हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर 11 kV, 66 kV, 400 kV. हाई रेटिंग का होगा. हाई रेटिंग मतलब कोर टाइप. ओके. एन आइडियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंजेस voltage, current, power, none of the above. See here, voltage, power तो और power same है. So actually an ideal transformer does not changes current, power. ये भी constant है, ये भी constant है, ये भी constant है. None of the above. या तो correct answer होता all above. But here actually ideal transformer में primary और secondary terms are same, so voltage will not change, right? That is the answer A. Question number 22. A transformer sets up the voltage by a factor of 100. Step up.
The primary voltage 1 है तो secondary voltage 100 है, right? The ratio of current in the primary to secondary. अगर secondary voltage बढ़ रहा है step up by 100, secondary voltage बढ़ेगा तो secondary current क्या होगा? कम होगा. Power will remain same. Voltage increases, current decreases. Okay, so power will remain same. So current कितने से decrease हो जाएगा? 1/100 से. सेकेंडरी वोल्टेज अगर वोल्टेज का ऐसा है 100/1 है, प्राइमरी वोल्टेज 1 है तो ये V2 है सेकेंडरी वोल्टेज, तो सेकेंडरी करंट विल बी, तो क्या आएगा 0.01. आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर. ए 400 वोल्ट to 100 volt transformer has secondary turns are 16. So we know E2 upon E1 equal to N2 upon N1. That is called as K. अगर E2 कितना है 100 है और E1 कितना है 400. देखो दिख रहा है E1 is 400, E2 is 100 equal to what? Secondary turns are 16. N2 कितना है 16. So N1 कितना होगा? So N1 equal to what? 1/4. This is cancelled. और okay, sorry. So N1 equal to what? यहाँ जाएगा 16 और इंटू 4/1 हो जाएगा. ये इधर जाएगा, इधर आएगा 64. 20 करेक्ट, राइट. So 64. So question number 23, 64 answer is correct. The transformer rating is expressed in volt ampere. Why the rating is volt ampere? On both sides it is constant, because it is both sides it is constant. No, losses are independent of load power factor. Yes, this is the correct answer. Losses are because losses में क्या है? Iron loss है और copper loss है. Okay, so iron loss depends on what? Voltage. Actually iron loss फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, और कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट के ऊपर, लोड के ऊपर. नॉट ए नेचर ऑफ लोड, इट इज डिपेंडिंग ऑन लोड. सो I2 क्लियर. सो बोथ लॉसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर. हैंस क्यों पावर फैक्टर, क्यों आप बोलेंगे सर कॉपर लॉस इज ओमिक लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, सो उसके ऊपर पावर फैक्टर का इफेक्ट नहीं आता. सो बोथ लॉसेज, वन आयरन लॉस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन द करंट. सो बोथ लॉसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर, हेंस इट इज in volt ampere, right? B is correct. A transformer having turns ratio is 1:1. Turns ratio 1:1 है, इसका मतलब क्या? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है. यस, ये आंसर इज करेक्ट. ओके, so these are the answers. I have given the answer key also. Sorry, answer key is given. Something was wrong actually somewhere in question number. I have given actually something was wrong. Question number, I don't know, maybe earlier, but that was I have already discussed. याद नहीं आ रहा, something was wrong, so I have to correct one answer here. Okay, anyway, so